হ্যালো। বলেন ম্যাম। তো পরীক্ষার আগে আজকে লাস্ট ক্লাস, ঠিক আছে? এটাই লাস্ট আজ আমার ফার্স্ট সেমিস্টারের লাস্ট ক্লাস নাকি আমাদের? না না না, আমার ও আচ্ছা আচ্ছা। ও আচ্ছা। मैम वेक्टर क्लास एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेती ना वेक्टर का। हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे वेक्टर उस दिन मेरा क्लास था। ঠিক আছে, আজকে দেখবো, চেষ্টা করবো ওটা শেষ করা, ঠিক আছে? তো यस मैम वेक्टर क्लास ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वाला पार्ट बच गया था। ঠিক আছে, जो डेल्टा डेल्टा वाला पार्ट था वो समझ नहीं आया डेल्टा है क्या, डेल्टा का मतलब इसका ঠিক আছে, किस আজকে चीज का নেওয়ার इस्तेमाल। চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? লাস্টে সলিড ओके স্টেটটা मैम। পড়ানো। তোমাদের 80 মার্কের পরীক্ষা হবে, ঠিক আছে? मैम समझ नहीं आया क्या बोल दिया। ओके मैम। 80 नंबर में एग्जाम है। अरे भाई तुम लोग पहले गौर से सुनो, है ना मैम क्या बोल रही, फिर अपना डाउट्स को पूछना। तो तुम अरे लोगों भाई का बंगला समझ नहीं आता है। तुम लोगों का टोटल मार्क है 80, हाँ? तो इसमें मेरा पार्ट से आएगा 40 मार्क्स और सामिम के पार्ट से आएगा 40 मार्क्स, ठीक है? तो मैं 5 क्वेश्चन दूंगी 10 मार्क्स के, और उसमें से तुम्हें 4 करना होगा, ठीक है? कल मैम कल। एग्जाम में मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन अटेंड करने होगा 10 मार्क का, और वो होगा 40। मैं 5 क्वेश्चन दूंगी 10 मार्क में, तो 50 के अंदर 40 तुम्हें करना होगा, ठीक है? मैम एक ओके मैम। एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा मैं दूंगी। और एक जरूरी बात, पार्ट ए और पार्ट बी मेंशन होगा, तो मेरे पार्ट में पार्ट ए का सब एक साथ करना और पार्ट बी का सब एक साथ करना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पार्ट ए का किया, फिर पार्ट बी का किया, फिर पार्ट ए का किया, तो ऐसे हम लोगों को पेपर को तुम्हारा जो आंसर पेपर देखने में दिक्कतें आएगी। तो इसलिए तुम एक पार्ट का आंसर एक साथ ही करना, ठीक है, एग्जाम में। और ओके मैम। और मैंने आज ग्रुप में एक सजेशन दिया 9 क्वेश्चन का, वो तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है? मैम उसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। मैम तुम पर लोगों वो ने जो नाइन पेजेस का जो था, पर हाँ, क्वेश्चन मैंने कैरी 10 मार्क्स। पर क्वेश्चन नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। एक सपोज 10 मार्क है तो ये 2 पार्ट 2 अच्छा मैम और बुझे गेलाम 3 बुझे गेलाम। प्लस 4, ठीक है? ম্যাম বলছি যে ম্যাম কি এই 9টা কোশ্চেন থেকে কি কোশ্চেন থাকবে না এগুলো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হিসেবে দিয়েছে? সাজেশন হিসেবে দিয়েছি, কারণ তোমাদের তো মাত্র 4-5টা ক্লাস নিতে পেরেছি, তো হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। টোটাল সিলেবাস থেকে তো আমার দেওয়া সম্ভব না। হ্যাঁ আর ম্যাম ওটা তোমাদেরও সাজেশনে সলভ করলাম ম্যাম, সলভ করলাম हाँ, ম্যাম। क्यों नहीं रहेगा। की एमसीक्यू ম্যাম एमसीक्यू এমসিকিউ वो নেই। 2 मार्क है ना, वहां पे वो ही एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 मार्क का है, ठीक है? बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट मैथ आएगा 3 या 4 मैक्सिमम मार्क, और मैक्सिमम क्वेश्चन इज 2 मार्क, ओके? So in crystal, we see that atom are uh, placed in a ordered manner. In your previous class, you read interference.
So young double slit, you remember the young double slit interference pattern when there is two tiny hole. When there is two tiny hole and if the light is light cross it, then you see that in some distance. मैम कुछ लोग ज्वाइन होने का ट्राई कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল, বলছি কি ম্যাম খাতা কি আপনি দেখবেন? হুম, আচ্ছা আমি আর শামিম মানে যে আমরা পড়াচ্ছি আমরাই দেখবো। ওকে দুটো আলাদা আলাদা পার্টে লিখবে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো আমি যেটা বলেছি? মানে শামিম স্যার এটা পার্ট এ বা বি তে দুটো, আমার ধরো পার্ট এ তে আছে আর শামিমের ধরো পার্ট বি তে আছে, তো পার্ট এ অ্যান্সার গুলো এক জায়গায় লিখবে আর পার্ট বি গুলো এক জায়গায়, যাতে আমরা আলাদাভাবে খাতা দেখবো তো তাহলে মার্ক দিতে সুবিধা। আচ্ছা ম্যাম ঠিক আছে। मैम हिंदी इंग्लिश में बोलिए ना। ये सब डिस्कशन मैम, लास्ट PDF पे में आलादा कर করে लीजिए বানাবো? ना, अभी क्लास करा दीजिए। না না না, পিডিএফ আলাদা না, একসাথেই দেবে। একটা পিডিএফ এই দুটো পার্টে কাটবি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু একসাথে দেবে, মানে পার্ট এ একসাথে পার্ট। ওকে ম্যাম, ওকে। ঠিক আছে। So in interference you see that বলছি ম্যাম, পিডিএফ এর নেমটা শুধু রোল নাম্বারটা লিখতে হবে নাকি? মানে পিডিএফ এর যেটা নেম হবে। তোমাদের এইচওডি তোমাদেরকে বলে দেবে কিভাবে দিতে হবে, ঠিক আছে? তোমাদের একটাই হয়তো ইমেলে দিতে হবে, তো তোমরা সেই ইমেলে দিয়ে দেবে ওটা, ঠিক আছে? তো তোমরা ইন্টারফারেন্স প্যাটার্নে ব্রাইট ফ্রিঞ্জ আর ডার্ক ফ্রিঞ্জ পরপর অ্যারেঞ্জ ম্যানারে তোমরা দেখেছো, আর কন্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্সে তোমরা এটাও দেখেছো যে ইন constructive interference you saw that the path difference there is one condition, that is path difference is equal to integral multiple of wavelength lambda. This is the condition for constructive interference. So in atom atom are arranged in a order manner. You see that this is one atom, this is two atom. So you think that this is one atom, this is two atom, 3 4. When light is incident on this atom, then the light is reflected by this atom. When light is incident in this atom, also this light is scattered in this direction. So you think that this ordered atom as a natural grating. So if the path difference between two incident line is path difference is integral number of n lambda, then the scatter ray in some plane scattered ray form a interference, and which is constructive interference. So you see that in this line path difference equal to 2d sin theta. Actually here first line, suppose consider line 1, then
the line 1 is this, and line 2, if so in line 2, this is the second incident line, and the scatter ray in this direction. If you draw a perpendicular from this line to this line and from this line to this line, then so this and this same length, and this is same length. So this LQ and QM is extra. So path difference is LQ plus QM. So this two line, this consecutive two incident rays, the path difference is LQ plus QM. And you know that this is one atom and this is two atoms. So this is two plane, and the distance between two plane is nothing but interplanar distance d. So this is the d, and this make angle theta. So if you split this d in two direction, that is this PL direction, and suppose and this direction, so this is d, so this is d cos theta, and this direction is मैम sin कुछ और theta. स्टूडेंट हैं ज्वाइन, उनको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे यार तुम बार बार डिस्टर्ब क्या कर रहे हो? So so this is d sin theta and this is d cos theta. So LQ is parallel to this d sin theta. So LQ length is d sin theta. And similarly, this is also d sin theta. So the path difference is d sin theta plus d sin theta equal to 2d sin theta. So for constructive interference, this path difference equal to n lambda. So you get this condition 2d sin theta equal to n lambda. And this equation is called the Bragg's law. Bragg's law for reflection. In this scattering, the diffraction and reflection is a similar term. So you call it as Bragg's reflection or Bragg diffraction. And now we read the Ewald construction. So you learn that n lambda equal to 2d sin theta. So if we write lambda
So lambda equal to nothing but 2d sin theta by n. And here we put integral n is equal to 1. So the Bragg's law becomes lambda equal to 2d sin theta. So now you write the Bragg's law as sin theta. You write this sin theta equal to lambda equal to 2d sin theta. So write sin theta equal to lambda by 2d. And you write it as 1 by lambda, 1 by d by, if you write it in down, then it's become lambda by 2 become 2 by lambda. So sin theta is nothing but perpendicular by hypotenuse. So if we draw a triangle, this is 90 degree and this is theta. So the perpendicular is this and hypotenuse is this. So here perpendicular is 1 by d and theta, hypotenuse is 2 by lambda. So you know that if you draw a circle and this is your diameter, then -90 degree. So this your 90 degree and you call this as theta. So here this is the base, this is the perpendicular, this is the hypotenuse. And hypotenuse, you see that hypotenuse length is 2 by lambda. So the radius is 1 by lambda, 1 by lambda. And perpendicular is this, and so this is 1 by d. So yield construction is nothing but a sphere where the radius is 1 by lambda. And we draw a line OP that its length is 1 by lambda, 1 by d, and this is your 90 degree. So by drawing this, you suppose your AO is the incident ray, and actually AO is the incident ray, and you suppose that AP is your crystal plane. So if in this center C there is another crystal plane, then you saw that this is theta and this is the radius. This is radius and this is radius. So this is also theta, and so this is 2 theta. So you say that this AC is the incident ray and the CP is the reflected or diffracted ray. So you suppose that in this C center there is a crystal plane, and for this crystal plane there is some diffraction, and CP is the diffracted ray. And this you see that this OP is nothing but 1 by d.
So you called 1 by d equal as sigma. This is nothing but you denoted this sigma as a reciprocal lattice. So you say that has the length 1 by d h scale equal to sigma h scale equal to g as reciprocal lattice. So if we so suppose there is a crystal. So crystal is nothing but mm, uh, some collection of ordered atom. So if some ray is incident and the ray have some definite wavelength. So if we draw a sphere of radius 1 by lambda, that means the incident ray have some lambda, and if we draw sphere 1 by lambda, and if you see that in this sphere there is some point P. If you see that P intersect this sphere, then the Bragg diffraction condition, that is 2d sine theta equal to n lambda, is satisfied. Because if if we draw 1 by lambda a sphere, and you see that there is some intersection point P in this sphere, then the Bragg's diffraction condition satisfied. So you see that there is a reciprocal lattice in this sphere. So this is your geometrical interpretations of Bragg's law. Okay. So you think that why we introduce reciprocal lattice? Because we already know how to represent a crystal by lattice vector, simply lattice, space lattice. So actually, so বলছি actually, yes. হ্যাঁ বলছিলাম তাহলে রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টরের ডেফিনেশন চাইলে কিরকম ভাবে বলবো? বলবে কি দুটো অ্যাটমের মধ্যে একটা ইন্টারস্প্লেনার স্পেসিং হচ্ছে ডি, তো ওর 1 বাই ডি, মানে একটা নর্মালটা একটা প্লেনের উপর নর্মাল টানলাম, তার রেসিপ্রোকাল মানে তার 1 বাই ডি মানে ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং এর। মানে ম্যাম ওই পিকচারটা ড্র করে আমাকে এটা এক্সপ্লেন করতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সিম্পলি বইয়ে আছে, দেখে নেবে। আর 1 বাই ডি প্রথমে প্লেনটার নর্মাল নেবে, তারপরে 1 বাই ডি লেন্থ নেবে, তারপরে রিপ্রেজেন্ট করবে, ঠিক আছে? আর সো একটা প্লেনকে ডিফাইন করার জন্য ইফ ইউ define a plane, so you in 2 dimensions, so you must have 2 coordinate, that is you x or y. But if you simply draw, this is not normal, suppose this is your normal n cap. So if you just tell that this is the normal direction, so you simply imagine this plane, this 2-dimensional plane. So by telling just 1 dimension, that the direction of n cap, you say you simply imagine the direction of plane. So you simplify this 2 dimension in 1 dimension. So if you just tell just normal of plane, then you imagine the plane. So here
we use a reciprocal vector because for simplification. You see that in this book, it is conceptually more easy to visualize them in terms of their normal as one-dimensional line. So this is your incident ray, and suppose this is k vector, and this is your reflected ray. This is k dash vector, and this is 1 by d, and I call it as reciprocal lattice. So we denoted it by G, capital G vector. So by simple vector addition, this k plus G equal to, this is the opposite direction, equal to k dash vector. So k dash is k plus G, and k is the propagation vector. So its magnitude is 2 pi by lambda, and because the sphere is same, so we call that mod k equal to mod k dash equal to 2 pi by lambda. So if we square this k dash value, then you get k plus g whole square. So it gives k square plus g square equal to 2k dot g, and you see that mod k plus equal to mod k dash is nothing but 2 pi by lambda. So this this modulus gives k square value, and and you see that k square is nothing but k dash square. So you simply can both sides k dash square and k square cancel out, and you get g square plus 2k dot g equal to 0. This is the vector form of Bragg's law. So now we calculate the reciprocal vector. So for derive the reciprocal vector, simply at first draw a normal to crystal plane. Then in this normal, you cut 1 by d length, and this represent your reciprocal lattice. But for in experiment, they saw that in space, for similarity, that space lattice, you already know the space lattice, and now you know the reciprocal lattice. So this is a similar term, but if you just write a star equal to 1 by d, then dimensionally it is not accurate. Experimentally show that if we multiply this by 2 pi, then we say that the reciprocal lattice is similar to space lattice. So not only you cut the length 1 by d, also multiply it by 2 lambda, 2 pi, and then you get the reciprocal lattice. So you see that a star equal to 2 pi by a, and b star equal to 2 pi by b. Here 1 by consider 1 by d as a, and a star equal to 2 pi by a. So if we multiply a star dot a, that is 2 pi a dot a, then it gives 2 pi, and b star dot b equal to simply get 2 pi. And how to calculate a star? So here you see a parallelogram.
and this is B vector and this is C vector. At first calculate the volume of this parallelogram. So this is nothing but area of this side B, this is B cross C equal to perpendicular distance between these two lines. So this is nothing but D100. So volume equal to, simply you get area of BC plane into D100. So in reciprocal lattice, I told you that this is nothing but 1 by D, and for similarity we multiply it by 2 pi. So this 2 pi by D gives you the first reciprocal lattice, that is A star, and the D is the interplanar spacing of this plane 100 plane, and this gives you the A star value. So if you put this 0 value which you get by this volume expression, V equal to A into D100. So from here you get 1 by D equal to nothing but A by V. So you put this value 1 by D value, so you get 2 pi A by V. So here A is the area and B is the volume. So this is 2 pi, area হচ্ছে B cross C and volume is A dot B cross C. So in book you see that S star equal to 2 pi D100 equal to 2 pi B cross C A dot B cross C. Similarly you get the B star and C star, the other reciprocal vector. For B star, you take the plane D010, and for C star you take the plane D001. So B star equal to 2 pi by D010, and volume is always same, so it get B dot A dot B cross C, and for D010 plane, the area of plane, here the area is BC plane. For B star reciprocal vector, it's nothing but AC plane. So here you calculate C cross A, the area of this vector by this volume, and for C star this become A into B. So you see a pattern. At first for A star you get B cross C, for B star you get C cross A, and C star A cross B. So you remember this A star, B star, C star reciprocal reciprocal lattice parameter, and by knowing this reciprocal lattice parameter, we calculate other reciprocal lattice vector like body center cubic crystal, or like face center cubic crystal. We later calculate this thing. So and one thing, in space lattice, any in space lattice, any lattice
parameter, any lattice can be represented by this translation vector T as here integer. You saw the book. So in a 3-dimension, you represent any lattice by this translation vector T equal to so you write T equal to N1A plus into B plus N3C. You put N1 into N3 any integer value and get all the lattice. If you put N equal to 2, N equal to 1, N3 equal to 3, you get some lattice, and if you put another N1 into N3 value, then you get another lattice. So N1 into N3 is nothing but HKL value. So in reciprocal lattice, this reciprocal lattice is similar to space lattice. So simply here we write translation vector of this reciprocal vector, and this translation vector is write by capital G, and this is the sigma HKL, and you write A, B, C as A star, B star, C star, and in translation vector, you see that there is N1, N2, N3, and because this is 1 by, this is reciprocal lattice, so all the here use the reciprocal term. So you see that here N1, first term is N1A, so in reciprocal lattice, this is become 1 by N1. So you think is we take the reciprocal of N1, so it's nothing but Miller indices H, and so in this case, capital G, we write HKL as a Miller indices, and capital G is written by H A star plus K B star plus L C star. So at first we calculate the reciprocal reciprocal lattice of AC crystal. So that is simple cubic. So for simple
primitive translation vector A, B, C is nothing but just A I cap, B j cap, C k cap. So simply put the value here. This formula A star equal to 2 pi B cross C by A dot B cross C. So you put this B value as Bj cross C value C k cap. So C k cap by and put the value of A, that is A I cap dot B j cap cross C k cap. If you multiply it by vector multiplication, you get simply 2 pi by A I cap. And B star equal to 2 pi by A j cap and C star equal to 2 pi by A k cap. So this is your reciprocal vector for simple cubic crystal. And for body center cubic PCC lattice, at first calculate the primitive translation vector, that is ABC, and put it A star B star C star formula. So for body center, atom is placed in body in center. So this is one atom, this is one atom, this is one atom. So at first we consider this is A, this is B, and this is C. And this is your X coordinate, this is Y coordinate, and this is Z coordinate. And so you get that the direction, this is the middle point. So the in X coordinate, the length is A by 2, and in Y coordinate, this is A by 2. And an atom is placed here, that is negative direction of Z. So this is minus A by 2 K cap. So A dash is written by A by 2 I cap plus A by 2 J cap minus A by 2 K cap. A by 2 common you take and get I plus J minus K cap. So for B dash vector, simply the X direction is negative, Y direction is positive, and Z direction is positive. So here only minus I cap plus J cap plus K cap. For C direction, you tell me. For C direction, it is what? Hello? Hello? হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ বলুন বলেন শুনতে পাচ্ছি তো প্রিমিটিভ ট্রান্সলেশন ভেক্টরের জন্য সি ড্যাশটা কত হবে বডি সেন্টার কিউবিকের ক্ষেত্রে? হ্যালো, what is the value of C dash in this body center cubic? What is the value of C dash? I show you what is the A dash and tell you what is the B dash. So A dash is, this is the body, the atom is placed in this body, that is the middle point. So X, this is the X coordinate. So in middle, so X direction, this is A by 2, and the atom is in Y direction A by 2, and this is the negative direction of Z direction. So atom is placed here, so it is minus A by 2. So A is written by A by 2 I cap plus A by 2 J cap minus A by 2 K cap. Okay, you take the common A by 2 and
get ik plus jk. This is your a dash. So what is the value of b dash? Hello, anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, so please tell me the what is the value of b dash? Hello, হ্যাঁ ম্যাম কোনো জায়গায় কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলেন। এটা? আমি বলছি a dash এর হ্যাঁ, মান তো ma'am, বললাম, b dash এর মান কি হবে? b dash is equals to I plus k minus j. রাইট। আর c dash? So c dash is equals to নেগেটিভ ডাইরেকশন, hmm, এটা হচ্ছে x, এটা হচ্ছে y, তাহলে y ডাইরেকশন c অ্যাকচুয়ালি y এর ক্ষেত্রে যে b আছে সেটা x হচ্ছে মাইনাস, তো এখানে b ভেক্টরটা মাইনাস i ক্যাপ হবে, আর c টা হবে এটা y ডাইরেকশনে নেগেটিভ। টু আই মাইনাস জে প্লাস কে। হ্যালো, কি বললে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যালো, সিরিয়াসটা বলো কেউ। কে হ্যালো, yes, ma'am. সিরিয়াস সি বাই টু মাইনাস আই জে। হ্যালো, সবটাই বাই 2 হবে, কিন্তু i j k ক্যাপের ডাইরেকশনটা বলছি। এগুলো সবই কিউবিক ল্যাটিস, ঠিক আছে, যার ডাইমেনশন হচ্ছে a, সরি লেন্থ হচ্ছে a, তো বডি সেন্টারে অবস্থিত, তাহলে সবসময় এটা a বাই 2, x কোঅর্ডিনেট a বাই 2, y কোঅর্ডিনেট অলসো a বাই 2, আর z কোঅর্ডিনেট অলসো a বাই 2, ঠিক আছে, যেহেতু মিডিলে বসে আছে। এই অ্যাটমটার কোঅর্ডিনেট কত, ঠিক আছে, তো যেহেতু এটা নিচের এই নিচের ল্যাটিসে বসে আছে, তাহলে এই ল্যাটিসটা কি জেড নেগেটিভ জেড ডাইরেকশনে বসে আছে, তাহলে প্রথম এটা সিম্পল একটা ভেক্টর। এটা কি, এটা হচ্ছে তোমার অরিজিন। Ma'am, c dash is equals to x minus I minus j plus k. ইয়েস, রাইট। মাইনাস প্লাস জে। মাইনাস জে হবে সি এর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, যেহেতু ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা নেগেটিভে আছে, মানে এটা হচ্ছে এখানে এইটা হচ্ছে তোমার কোঅর্ডিনেট, এটা হচ্ছে এক্স কোঅর্ডিনেট, এটা হচ্ছে অরিজিন, তাহলে এটা মাইনাস এক্স কোঅর্ডিনেট, মানে এক্স এর মাইনাস ডাইরেকশন। এটা হচ্ছে ওয়াই কোঅর্ডিনেট, তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই এর মাইনাস ডাইরেকশন। আর এটা হচ্ছে জেড কোঅর্ডিনেট, আর এটা হচ্ছে জেড মাইনাস জেড এর ডাইরেকশন, ঠিক আছে। এবার আমরা এখানে এই অ্যাটম, একটা অ্যাটম কল্পনা করছি, আর তার করেসপন্ডিং এ তিনটে পাশাপাশি অ্যাটম কল্পনা করছি। সো এটা হচ্ছে তোমার এখানে যে ইউনিট ল্যাটিসটা আছে সেটা কি মাইনাস জেড ডাইরেকশন আছে, তার বডি সেন্টারে একটা অ্যাটম আছে, তার পজিশন আমি জানতে চাইছি, সেটা হচ্ছে আমার নাথিং বাট a ড্যাশ। এখানে আরেকটা অ্যাটম আছে, তার বডিতে একটা অ্যাটম বসে আছে, তার আমি বি ড্যাশ, তার পজিশন যেটা হচ্ছে সেটা বি ড্যাশ। এখানে একটা ল্যাটিস আছে, ইউনিট ল্যাটিস, সেখানে যে বডি সেন্টারে যেটা বসে আছে তার কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে সি ড্যাশ, ঠিক আছে। তাহলে আর এইগুলোর প্রত্যেকটারই কিউবিক ল্যাটিস, সো প্রত্যেকটারই লেন্থ অফ দ্য সাইড অফ দিস ল্যাটিস ইজ a, so if the atom is placed this body, হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে এখানে যে a dash b dash c dash, এটা আমি মানে আমি কি a dash-টাকে x প্লেনে বসাতে পারি না পারি না? এক্সপ্লেনে না, এটা আমার বডি সেন্টার কিউবিকের আমি রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস বার করছি, তো তো তার জন্য আমাকে এ বি সি এই তিনটে ট্রান্সলেশন ভেক্টর লাগবে।
হ্যাঁ ঠিক আছে, তো যেহেতু আমি বডি সেন্টারের ক্ষেত্রে বার করছি আর বডি সেন্টারের ক্ষেত্রে আই জে কে ক্যাপ তিনটে ভেক্টরই লাগছে, তো আমি এখানে এটাকে এ ড্যাশ হিসেবে লিখছি। ঠিক আছে, যেটা আমাকে সিম্পলি এক্সপ্লেনে আমি লিখতে পারবো না, তিনটে প্লেনই ইউজ হচ্ছে আমাকে। তো এ ড্যাশ ভেক্টরটা ডাইরেকশনটা, তাহলে ল্যাটিসে এই যে হচ্ছে এইটা হচ্ছে তোমার এ ড্যাশ, তার মানে আমি বার করছি যে এইটা এ ড্যাশ, এইটা বি ড্যাশ, এইটা সি ড্যাশ বডি সেন্টারের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এর আমরা রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস বার করতে চাইছি, বুঝলে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তাহলে আমরা এ বি সি পেয়ে গেলাম, মানে এ ড্যাশ বি ড্যাশ সি ড্যাশ পেয়ে গেলাম। জাস্ট put the value of this formula, that a star equal to 2 pi, here use b as a b dash into c dash by a dash b dash cross c dash. So put the value and simply multiply that. First is I cross I, j cross I, k cross I, j, and there is 9 term, and second j cross I minus j cross j, and k cross k. So k cross k is key, k sine theta is 0, so 0 k 0 cross k. So simply multiply it by vector multiplications, and you get the result this 2 pi by a I plus k for a star. Similarly for b star, this is 2 pi by a j plus k, c star is 2 pi by a k plus I. তো এটা সেম ফর্মুলা বসিয়ে হবে, এই i cross j equal to k cap, k cross j cross k equal to I cap, k cross I equal to j cap, এই ভ্যালুগুলো পুট করলে তোমরা এগুলো পেয়ে যাবে। আর যদি আমি তারপরে জেনারেল ফর্ম অফ রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ক্যাপিটাল জি আকারে বার করতে চাই রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টরটাকে, তাহলে এইচ কে এল আর এ স্টার বি স্টার সি স্টার এর মানটা বসিয়ে দিলাম, তাহলে বডি সেন্টার কিউবিকের জন্য আমরা ক্যাপিটাল জি ল্যাটিস রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টর পেয়ে গেলাম। আর সিম্পলি ফেস সেন্টারের ক্ষেত্রে এবার হচ্ছে ফেস সেন্টারের ক্ষেত্রে অ্যাটমটা কি হচ্ছে একটা ফেসে বসে আছে, তাহলে এখানে জাস্ট একটা কোঅর্ডিনেটই হবে, মানে একটা বলছি দুটো কোঅর্ডিনেট হবে আর একটা কোঅর্ডিনেট 0 হবে। তো মানে সাপোজ এখানে একটা there is one unit lattice, so there are 6 faces, so simply consider one face, this one face. So atom is placed here. So this is your A, this is your B, this is your C. So this is just A by 2 I cap plus A by 2 J cap. For this, just there is no value of X. So only A by 2 J cap plus K cap. And there is no value of Y. So this is only A by 2 I cap plus K cap. So you get 3 translation vector A dash, B dash, C dash, and simply put it A star, B star, C star, and by vector multiplication you get the reciprocal primitive translation
reciprocal lattice parameter for face center cubic, and for G reciprocal lattice vector, you put the value of A star, B star, C star, that is H A star plus K B star plus L C star, and you get this. And for A star, you get 2 pi by A I plus J minus K. B star, it is 2 pi by A minus I plus J plus K. C star, it is I minus J plus K. In yield construction, you imagine a sphere whose radius is 1 by lambda, and if this sphere there is any p point that is there is, if any reciprocal vector intersect this sphere, so you satisfy the Bragg's law and you get Bragg's reflection pattern. So you think that if this sphere you get a reciprocal lattice vector, then locus of this sphere, that is if you called this sphere as a K space, then the region of this K space you imagine is as a Brillouin zone. So just think it, and in your, if you read further solid state physics, then further you know the Brillouin zone. I don't I don't teach you the Brillouin zone, just give you idea of the Brillouin zone. Okay. So this is last chapter of your solid state physics in this exam, and those who don't attend vector classes, so now we start vector. ম্যাম আপনি কি সার্কুলার মোশন থেকে কোশ্চেন দিয়েছেন? এমনি 11-12 এর দিয়েছি জাস্ট একটা, হ্যাঁ ওই দেখলাম ওখানে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি হবে, ঠিক আছে, লিনিয়ার ভেলোসিটি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইনটু রেডিয়াস, ওটা জাস্ট 11-12 এর জাস্ট দিয়েছি। হ্যাঁ এটা তো ছিল মানে হোয়াট ইজ অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন। হ্যাঁ সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। ঠিক আছে, আমি এক্সট্রা কিছু দিইনি, যেগুলো জানো তাই দিয়েছি। ভেক্টর আইডিয়া। ম্যাম ইয়েস, বলছি লেখা পরীক্ষা বাদে যে 20 নম্বর থাকবে সেটা অ্যাসাইনমেন্টের উপর তো? 20 মার্কটা 10 মার্ক আমি দেবো, 10 মার্ক আমি নেবে, ঠিক আছে? তো আচ্ছা 10 মার্কটা আমি অ্যাসাইনমেন্টের উপর দেবো। ওটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাটেন্ডেন্স প্লাস অ্যাসাইনমেন্ট প্লাস ক্লাস টেস্ট হয়, তার ভিত্তিতে দেয়, কিন্তু তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপার তো নেই, তাই ওটা জাস্ট অ্যাসাইনমেন্টের উপরই পুরোটা দিচ্ছি। ओके मैम। मैम ओके मैम। हेलो मैम। यस मैम पिछले असाइनमेंट देने में थोड़ा सा मैम लेट हो गया था। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু দিয়ে দাও ওখানে दे दिए অ্যানাউন্সমেন্টে मैम, গিয়ে। दे दिए। হ্যাঁ যখন মাঠ বসবে তখন সব দেখবো, অন্তত তোমরা ট্রাই করো, ওগুলোই ওর মধ্যে থেকেই পরীক্ষা এসেছে, অ্যাসাইনমেন্ট করলে তোমাদের নিজেদেরই লাভ। ম্যাম আপনার কোশ্চেন করা হয়ে গেছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে।
ম্যাম আপনার পার্ট থেকে 40 মার্কস, শামীম স্যারের পার্ট থেকে 40 মার্কস আসবে। ম্যাম আমাদের সাজেশনটা দেবেন না? দিলাম তো, যেগুলো ক্লাস নোট দিয়েছি সেগুলো কি সাজেশনের থেকে কম নাকি? ওইটুকু জাস্ট কয়েকটা চ্যাপ্টার। मैम হুম मैम হুম हेलो হুম। मैम, मैंने सब असाइनमेंट सबमिट किया था मैम, क्लास गूगल क्लासरूम में मैम, लेकिन हुआ नहीं मैम। फर्स्ट सेकंड তাহলে थर्ड হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেবে আমাকে असाइनमेंट যদি না बना के পারো। अपलोड किया मैम, लेकिन होता ही नहीं। ঠিক আছে, যারা যারা क्या मैम? পারবে না হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে দিয়ে দেবে। हेलो, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? ओके मैम। तो मैम जिस नंबर से, यस मैम, यस यस। তো ডেল থেকে শুরু করবো, তাই তো? হ্যালো ভিক্টর। यस मैम। So this is your del operator. So del is written by as x cap del del x, actually I cap del del x plus j cap del del y plus k cap del del z. Okay. So if you मैम वेक्टर ऑपरेटर होता क्या है? व्हाट इज वेक्टर ऑपरेटर? actually this is an operator which has direction. So what is operator? This is nothing but you say some machine. Like if you give something, it transform it to another thing. Okay. Uh, like if operator is nothing like machine. So if you think ddx as a machine, so it operate on sin x and give you cos x. So ddx is a scalar operator because it does not depend on the direction of it. But del is a operator which operate on some quantity. It may be scalar and some quantity. So it has direction. That is, it is written by I cap, that is the direction of x cap plus j cap del del y plus k cap del del z. So del is a operator which depend on the direction of depend on some direction. So this is a vector operator. So if it operate some quantity, say some sin x cos y, so you write it as del del x plus k. Understand? Hello? यस मैम। হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। So del del x operate on sin x and give cos x. So I cap cos x cos y plus j cap del del y. There is cos y, so it gives minus Minus sin. sin y. So it is sin x into minus sin y,
and there is no term of z vector, so this gives 0. 0 0. So this is your result. So this is your del operator. So they'll operate on some scalar function t, then del t called it as gradient. If del operate on vector and there is a dot product of, so del dot v, call it the divergence, and if there is a cross product, that is del cross v, call it as the curl. Okay. Okay. So del dot v, so you split v vector vx I cap plus by j cap plus vz k cap, and you get del vx del x plus del vy del y plus del vz del z. So here is your geometrical interpretation. So divergence nothing but spread out of something. You previously read it in your electric field that if there is some point, so electric you suppose imagine it as a electric line of force. So here the line is diverge point in the some quantity spread out. This is the geometrical interpretation of divergence. Okay. And curl. Del cross V, the x, y, and z component vx, vy, vz, and if you simplify it, then you get this term 1.41 term, and the physical significance of curl is nothing but it's the quantity is curled around some point. Here you consider the origin, so the quantities curl around this direction. So if you consider it as a three-dimensional case, so you just see that it's nothing but some quantity curl around. Okay. And divergence spread out, just simply spread out in all direction. So there is a line integral, surface integral, volume integral. You know it that if there is some line, then if you calculate some vector over this line, some vector that v, so line integral is nothing but some v dot dl, and if you put initial and final value of this integration, then you limit that in path A and B, you get the value of B dot dl.
And surface, you know already, surface integral, that is, you take a surface and uh, get B dot ds. So surface integral is nothing but flux. So there is dA surface, and in this dA surface, if some vector is come out or come in, then it gives nothing but flux of the quantity. And in volume integral, how much quantity is in this volume? So, and this is a fundamental theorem of calculus. You already know that if fx, the integral is fx dx, and initial values of this integral is a to b, then if df dx equal to capital Fx, then it gives f of x, and the value of x equal to a to b, so it gives f of b minus f of a. So there is two formula, fundamental theorem for divergence and Stokes formula. So divergence, you see that divergence theorem is nothing but del dot b, that is divergence of b, and the divergence of this volume integral dv equal to b dot ds, that is the surface integral of b dot ds, and obviously the surface integral is closed. So del dot b, in physical significance, you see that del dot b is nothing but how much vector is spread out. So you see that there is point, then in all direction the vector is spread out. So if you take a volume, then in this midpoint, in all direction the vector or some quantity is spread out. So in this volume, how much quantity spread out is give del dot b dv and integration. So this is the this volume integral is nothing but how much quantity spread out from this volume. Okay, so this part gives you that this, and b dot da, b dot da is nothing but b dot ds, that is the surface integral that gives the flux if there is a surface, and b is the quantity, so b dot ds is nothing but the flux. So if you take a cube and you consider all the faces, so this face v dot ds means this, and all the faces, all 6 faces, you see that the vector is spread out from all the 6 faces. So if you consider the closed surface,
then you consider all the 6 faces, and you see that this gives the uh, vector, how much quantity spread out from this cube, and this also gives you how much quantity spread out of this volume. So the volume integral of divergence B is nothing but surface integral, closed surface integral over some closed surface ds. Okay, so this is the interpretation of this theorem. Which gives volume integral equal to surface integral. Obviously, surface is closed. If not closed, then it is meaningless. You understand? Hello? Ma'am, what is the ma'am d tau means? D tau is nothing dv. What is the meaning Okay, of dv meaning হচ্ছে you previously know dx. Okay, so this is your line integral. If this is ds, some quantity y ds is nothing but dx dy. So surface integral. Okay, so and this is d tau is nothing but dv, that gives dx dy dz. Hello, you know the ma'am? integration, surface integration, volume integration, line integration. Okay, so you understand that the what is the interpretation of this volume integral equal to surface integral? Hello, Yes, yes, ma'am. this is Ma'am, vital why part. we writing Hmm? इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट में v क्यों है वो? जस्ट जस्ट तुमको समझाने के लिए कि वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, नथिंग एल्स. ये तो Okay. बहुत डिफरेंट है ना. सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे सरफेस इंटीग्रल होगा? जो ये मैंने बोला डेल डॉट भी कुछ भी नहीं है, हाउ मच वेक्टर स्प्रेड आउट फ्रॉम दिस वॉल्यूम. Okay, so if you take a point, then del dot v is spread out of this vector quantity. Del dot v means if you integrate it with in some volume dv, that is del dot v dot d tau nothing but dv. So del dot v dv integration v, so it gives how much quantity spread out from this volume. Okay, तुमको समझ आया इस पार्ट का मीनिंग क्या है? हेलो, ओके, हाँ मैम, क्लियर है. और इस पार्ट का मीनिंग है v डॉट ds, जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था e डॉट ds. सो e डॉट ds कुछ भी नहीं था, एक सरफेस था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन था. तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस ds से पास हो रहा था, वही था d डॉट ds, that is nothing but flux. Okay, so here you take the whole closed surface, that is if you take the cube, then you calculate the all faces of this cube. So तुमको all face, ये एक फेस में कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, तो यहाँ भी एक फेस है क्यूब का, यहाँ पे एक होगा, ऊपर में एक होगा, इस साइड में एक होगा, नीचे एक होगा, तो 6 साइड में ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर हो रहा है. तो अगर मैं क्लोज सरफेस लूं तो वे 6 फेस को मैं कंसीडर करूंगी. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 6 सरफेस से ही कितना अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रहा है. सो दिस इज नथिंग बट द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, लाइक कंसीडर. ओके, सो हियर इट सी दैट यहाँ पे भी तुमने देखा ये वॉल्यूम में कितना बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और यहाँ पर भी देखा जे कितना लाइन ऑफ फोर्स इस 6 स्पेस में बाहर हो रहा है. तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल तुम लिख सकते हो. ऑब्वियसली सरफेस इंटीग्रल इज क्लोज. अगर क्लोज नहीं करते तो तुम
6 कंसिडर भी तो क्लोज है इसलिए तुम 6 कंसिडर कर रहे हो। अगर मैं क्लोज नहीं करती तो जस्ट वन फेस कंसिडर करते, तो वन फेस इक्वल टू नॉट दिस वॉल्यूम इंटीग्रल। सो तुम्हें मैंडेटरी है क्लोज सरफेस लिखने। हेलो, समझ में आया? हेलो, हाँ मैम। सरफेस इंटीग्रल को सब समय फ्लक्स की तरह कंसीडर करना, तो समझ में ज्यादा आएगा। और यहाँ है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कार्ल। सो कार्ल में कार्ल क्रॉस भी मैंने देखा, इंटरप्रिटेशन दिया था कुछ देर आगे पहले दिया था कि एक पॉइंट, टेक सम पॉइंट एंड take some point and just the quantities curl around that point. This is give you the physical meaning of curl. जो कर्ल है एक पॉइंट के अराउंड में, ये कैसे कर्ल हो रहा है वही देता है कर्ल। अगर और यहाँ सरफेस इंटीग्रल मैं कंसिडर कर रही हूँ, डी ए इज नथिंग बट डी एस, सो एक सरफेस कंसिडर कर रही हूँ। सो इस सरफेस में कर्ल, कितना कर्ल अराउंड हो रहा है यही तुमको देगा ये सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे इस मीनिंग को समझने के लिए मैं छोटे छोटे सरफेस कंसिडर करूंगी और इसका कर्ल लूंगी। यहाँ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे कर्ल है, और अगर ये एक डायरेक्शन यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके पास वाला में जस्ट क्लॉकवाइज होगा। ऐसा करके अगर ये क्लॉकवाइज है उसका पास वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसे ही डायरेक्शन में ये पूरा फिल अप होगा। तो ये जो लाइन है, सपोज द टाइनी surface, so here the direction is this direction, and for this this is if this is clockwise then it must anti-clockwise, so clockwise and anti-clockwise vanishes, and for this is anti-clock, if this is anti-clockwise then the direction of this is clockwise, and consecutive, if this is anti-clockwise then इसके बाद में जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ऐसे करके ये जो लाइन है वो कैंसिल आउट होते जाएगा। तो ये जो सरफेस का जो लाइन है यहाँ पे जस्ट एक ही है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक है जो कैंसिल नहीं होगा, ये लाइन यहाँ पे भी एक है जो कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसे करके तुम देखोगे इस जो सरफेस है, इस सरफेस में जो सरफेस लाइन है वो ही केवल एग्जिस्ट कर रहा है इस कर्व में, और बाद बाकी
डायरेक्शन सब कैंसिल आउट हो रहा है। तो यही है ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस कार्ल का मीनिंग। और b dot dl is nothing but a line integral. So if you take a line, so if you integrate it, then this gives the line integral, but this is the your closed line integral. There is some, this gives you the closed integration. So if you take this, then this closed line integral gives this value, and this is nothing but this value. So here the surface integral equal to closed line integral. Okay. Hello. Hello. ओके मैम। ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कार्ल। और जो है वो तुम लोगों प्रीवियसली पढ़ चुके हो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैथ में भी शायद पढ़ोगे। तो यही तुम्हारा लास्ट क्लास है, ठीक है। ओके मैम। मैम ये वाला नोट्स नहीं है शायद हम लोग के पास, ये नोट्स सेंड कर दीजिए। मैंने दिया है वेक्टर का, ये ग्रिफिथ का जो बुक है ना वो फर्स्ट चैप्टर है ये। वहाँ पे वो जो था ना वो डिफरेंट था, ये फ्लैट एकदम, वो थोड़ा डिफरेंट कर्ली कर्ली था। वो बुक का स्क्रीनशॉट लिया, मतलब फोटो खींचा ला, ये लग रहा था कि प्रिंट आउट टाइप का। ये वाला ठीक है, ये आप सेंड कर दिया है ना? ये बुक का, ये डायरेक्ट एक बुक का पीडीएफ है, और मैंने जो फोटो खींचा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का था, ठीक है। मैंने वेक्टर का बुक ही दिया था। नहीं, मैथ्स पढ़ रहे हैं एज अ मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़ते हैं फिजिक्स के, वही है ना? हाँ सेम है, मैथ में जो 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 वेक्टर पढ़ते हो वो ही है ये। नहीं, जो 11 में हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना था मैथमेटिकल टूल्स, सी अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग में मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से ना पढ़ा रही है आप मैथ्स। नहीं एक्चुअली मैं मैकेनिक्स में वेक्टर है वो ही पढ़ा रही हूँ, मुझे तो मैथ टूल कुछ नहीं बोला, तो शायद तुम्हारा मैथ टीचर पढ़ाएगा। मैं फिजिक्स में पढ़ा रही हूँ मैकेनिक्स चैप्टर में, ठीक है। ओके। तो तुम्हारा लास्ट क्लास है, सब हो तुम या सब चले गए? सबको ही तो है ही। है मैम, है सब है। 53 है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम देना, और कोई सप्ली नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन थोड़ा इजी दीजिए क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं है और क्वेश्चन प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट मैंने जो पढ़ाया है उसी के ऊपर दिया है, ठीक है। हाँ, पर ऑनलाइन में उतना समझ नहीं आ रहा ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, टाइमिंग कम मिल रहा है सबको।